આપણને સુંદર શરીર મળ્યું છે, આપણને સુંદર સમય મળ્યો છે, આપણને સુંદર શક્તિઓ મળી છે, આપણને બહુ જ સુંદર અનુકૂળતાઓ મળી છે. આ બધાનો ઉપયોગ આપણે ક્યાં કરવાનો? મળે છે આ બધી જ વસ્તુ પુણ્યથી, અને આ વસ્તુનો ઉપયોગ જો સત્કાર્યમાં ન થાય તો મળેલી આ બધી જ વસ્તુ નિરર્થક છે. ગઈકાલે જ આપણે વાત થઈ, ચશ્મા ગમે તેટલા કિંમતી હોય પણ આંખે દેખાતું જ ન હોય, ઘડિયાળ ગમે તેટલી કિંમતી હોય પણ સાચો સમય જ ના બતાવતી હોય, દુકાન ગમે તેટલી મોકાની હોય પણ ધંધો કરવાની આવડત જ ન હોય, એમ આ જીવન મળ્યા પછી સારું કાર્ય કરવાની સદબુદ્ધિ ન થતી હોય અને સારું કાર્ય થતું ન હોય. બહારની દ્રષ્ટિએ સત્કાર્યો અને અંદરની દ્રષ્ટિએ સારી સાધના, આ બે ચીજ આ જીવનની સાર્થકતા કરે છે. આપણને લાગે છે કે આપણો એક એક દિવસ જાય છે કે કિંમતી જાય છે, એક એક પળ હાથમાંથી જાય છે કે કિંમતી જાય છે. ગયેલી એક એક પળ કે એક એક દિવસ પાછો આવવાનો નથી ક્યારેય પણ. અને જ્યારે આ ભાન હોય તો એ એક એક પળનો ઉપયોગ આપણે કેવી રીતે કરીએ? પુણ્ય કદાચ આપણને સાથ આપે. વૈરાગ્ય શતક નામના ગ્રંથમાં એમ કીધું છે, શા નથી કલા તમ નથી ઓસહમ તમ નથી કિંપી વિજ્ઞાનમ જેના ધરી જય काया खिंचती काल सपेणम. ऐसी कोई औषधि है दुनिया में नहीं है, ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है काल रूपी सर्प से खिंचती એટલે ખવાતી આ કાયાને એનાથી બચાવી શકાય. हो सकता है नीरव भाई, પુણ્ય કદાચ આખી જિંદગી આમ સામાન્યથી શું કહેવત છે ખબર છે? દરેક માણસનો દસકો હોય છે, દરેક માણસનો સમય હોય છે. આબાદી કાયમી નથી, સુખ કોઈ કાયમી નથી, જાઓ જલાલી અને માન સન્માન કોઈ કાયમી નથી. કેટલાય માણસો એવા નથી જોયા? રેડ કાર્પેટ બિછાતી थी, સમાજમાં સલામો ભરાતી थी, પણ આજે એમનો ભાવ પૂછનાર કોઈ નથી. ऐसे भी लोग है કે નહીં है? સમય દરેકનો એક સરખો નથી જતો. અમારો હોય કે તમારો હોય. पिक ऑफ लाइफ જેને કહેવાય, कोई शक्तिशाળી व्यक्ति હોય, कोई प्रभावशाળી व्यक्ति હોય, कोई पुण्यशाળી व्यक्ति હોય, અને એનો એક જેમ પીક અવર કહો છો એમ લાઈફનો પીક સમય આવે અને ત્યારે પણ પછી આપણે જોઈએ છે કે ઊંધે મસ્તકે જ્યારે પટકાય છે ત્યારે એના શું હાલ અવાલ થાય છે. હું કહું છું કે મેં બી કદાચ આવું ન પણ થાય, આખી જિંદગી પુણ્ય તમને સહાય કરે એવું પણ બને. કારણ કે ભૂતકાળની અંદર કોઈ એવું સારું કામ નક્કર કર્યું હોય તો 50, 60, 70 વર્ષ તમારું પુણ્ય અહીંયા ચાલે, એમાં કોઈ સરપ્રાઈઝ નથી. અહીંયા સારી સાધના, સારી ભક્તિ, સારું પુણ્ય બાંધ્યું હોય તો દેવલોકની અંદર પલ્યોપમ ને સાગરોપમના અવખા સુખમાં જાય છે કે નથી જતા? તો અહીંયા ભૂતકાળમાં કોઈ સત્કાર્ય કર્યું હોય, પુણ્ય બાંધ્યું હોય તો 50 વર્ષ નીકળી જાય. કેટલીક વ્યક્તિ એવી સાંભળવા મળે, महाराज साहब जिंदगी में हमने कभी सुख देखा ही नहीं है. જન્મ્યા ત્યારથી દુઃખ લઈને જ જન્મ્યા છે.
પરિવારમાં દુઃખ હતું, પરણીને સાસરે ગયા ત્યાંય દુઃખ, ધંધામાંય બરકત નહીં, પતિનું સુખ નહીં, છોકરાનું પણ સુખ નહીં, શરીરનું પણ સુખ નહીં. एक दिवस सुख नामનું तत्व हमें भोगव्યું નથી. ऐसे कहने वाले भी है और बहुत कम ऐसे कहने वाले भी है कि जीवन में आज तक हमने दुख भी नहीं देखा है, कुछ तनिक सा भी दुख नहीं देखा. એવા भी છે કે નહીં? born with silver spoon. ભાઈ ક્યાંક તો કર્મ છે, ક્યાંક પૂર્વભાવની સાધના છે, ક્યાંક પુણ્ય છે. હું કહું કે ભલે તમે દુઃખ નથી જોયું, પણ પુણ્ય તમારું તેજ છે એટલે બધી અનુકૂળતા રહી. એ મારી સામે જોજો, ચિંતન છે. પુણ્ય તેજ હોય એટલે સંપત્તિ કદાચ ઓછી ન થાય. પુણ્ય તેજ હોય, સમાજની અંદર માન સન્માન કે સત્તા કદાચ ઓછા ન થાય. પુણ્ય તેજ હોય તો જાઓ જલાલી, પ્રતિષ્ઠા, પદ કદાચ ઓછા ન થાય. मैं महावीर नगर में रहता था, कांदीवली में, मोहन जी. वहाँ हमारे एक बाबू भाई प्रेसिडेंट, कितना वर्ष थे प्रेसिडेंट से को? 60 वर्ष थे. विदाउट ब्रेक लगाया था. प्रेसिडेंट तो है, साथ में आराधक भी है. आज 100 साल पूरे हुए. ये आज भी है और आज भी प्रेसिडेंट है. अजूबा हो गया जानकर आपको. आदमी की योग्यता, आदमी का पुण्य, कोई भी स्थान में जाए सालों साल तक सत्ता बरकरार रहे, ऐसा भी हो सकता है. संपत्ति बरकरार, शक्ति बरकरार, समाज में मान सम्मान बरकरार. लेकिन एक बात समझना, काल की असर ये सब पे नहीं होती है, फिर भी ये शरीर पर खिज्जंती काल सप्पेणम. वैराग्य शतक कहता है कि काल रूपी जो सर्प है ये काया को डंख देता है और ये काया खवाई छे, रोजे रोज खवाई छे, घसाई छे, कूटाई छे, कटाई छे અને એના ઉપર મારાઓ પડે છે. और आज भी हम देखते हैं, एक बार कहीं बहु मोटा मोटा 50,000 करोड़ ना मालिक था. हमारे आंख सामने की बात है. अभी एक आशीष भाई बालाजी बिल्डर, आपने नाम सुना है? अहमदाबाद के ख्यात नाम बिल्डर थे. छोटी उम्र थी, 45-50. हाँ क्या ये सब देख के भी वैराग्य भाव नहीं पैदा होता है? जन्म बहुत कठिन है, मौत बहुत आसान है. आज के दायरे में जन्म लेना बहुत कठिन है और मौत बहुत आसान है, क्योंकि तरह तरह के रोग कहां से कहां निकल जाते हैं. आशीष भाई ने खाली एक मच्छर काट्यो. हाँ शू थे? डेंग्यू नु एक मच्छर, डेंग्यू, हॉस्पिटलाइज, बीजे दिवसे केस कोलेप्स. चिंतन तो कीजिए, आप कितने भी बड़े हो गए, एक मच्छर की ताकत है आपका अस्तित्व मिटाने की. समझे क्या? आपकी 1000 करोड़ की संपत्ति भी आपको बचा नहीं पाएगी. न થાય વૈરાગ્ય આ બધું જાણીને જોઈને? किसको खुश करना है? कौन काम आएगा? कहां हमारा रुझान है? હું તમને પૂછું, દેરાસરમાં તમે જાઓ, ભગવાનની સ્તુતિ સ્તવના કરો, નીકળતી વખતે ભંડારમાં રૂપિયા નાખવા માટે પાકીટ કાઢો. પાકીટની અંદર 100ની નોટ પણ હોય ને 10ની નોટ પણ હોય. कौन सी नोट डालते हो भैया?
ભગવાનને ખુશ કરવા માટે નાનામાં નાની નોટ. आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, वाइफ को खुश करनी है, पॉकेट निकालते हो, छोटी नोट या बड़ी नोट? हाँ? बंडल पूरा बंडल सब तेरा ही है, मैं भी तेरा, सब कुछ तेरा. તાજું પરણેલું એક કપલ હોટલમાં જમવા માટે ગયું. टेबल ऊपर बैठा था. पति ने कहा, प्यारी अब तो हम दोनों एक ही हो गए, अब तो हम दोनों एक ही हो गए. पत्नी ने कहा, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन ऑर्डर 2 थाली का देना. हाँ? कितना भी प्रयत्न करो, कोई भी संसारी व्यक्ति के साथ कभी आप एक नहीं हो सकते. स्वार्थनी कड़ी वच्चे आवे आवे ने आवे. लेकिन हमारा रुझान जो तारक तत्व है उनके प्रति उदासीन है, और जो स्वार्थ भरे तत्व है उनके प्रति हमारा रुझान है. जानते हैं सब कुछ हमारा नहीं है, स्वार्थ से भरा है, काम आने वाला नहीं है. देव और गुरु के अलावा कोई सच्चा आधार नहीं है, वही काम आने वाला. सब कुछ जानने के बावजूद भी हमारा रुझान परमात्मा को खुश करने की मंशा या परिपत्नी और परिवार को खुश करने की मंशा. एंड वक्त पर परमात्मा साथ देंगे या पत्नी या परिवार साथ देंगे. जब कोई नहीं आता मेरे राजा आते हैं. चाहे शरीर का कोई रोग हो, चाहे सांसारिक विपत्तियां हो, चाहे आर्थिक संकट हो, चाहे समाज ने मुंह फेर दिया हो, चाहे हमारा परिवार भी हमारे से विमुख हो गया हो, चाहे बच्चे बच्चियां भी न करने जैसे धंधे कर रहे हो और हम त्रस्त है, उस वक्त कौन सांत्वना देगा, कौन शांति देगा, कौन समाधि देगा? ये पूरे समाज में से गुजराती में बहुत सरस मजानी कड़ी छे. संबंधीओ बधा आंसू लूछनारा नहीं होता. मारू 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 पूरी जिंदगी रिश्ते निभाने में पूरी करने वाले कभी अंतरात्मा को एकांत में जाकर पूछना, सही मायने में मेरा कौन? मेरा समय आएगा तो मेरा हाथ पकड़ने वाला कौन? आगे बढ़कर टाइमली हेल्प करने वाला कौन? और मुझे बचाने वाला कौन? संबंधीओ बधा आंसू लूछनारा नहीं होता. मैं कहता हूँ जेम जीवो जीवजो, पण थोड़ू समझो तो खरा. ये हमारा प्रयत्न आपके जेहन में सच्चा ज्ञान और सच्चा वैराग्य भाव पैदा करने का हमारा प्रयत्न है. ये समझो तो खरा. भगवाननी भक्तिનું પુણ્ય તમને બચાવશે. ગુરુના પાત્રામાં નાખેલું દાન, સુપાત્ર દાન, આ ક્યાંક આડું આવીને તમને બચાવશે. ક્યાંક કોકને કરેલી સાધર્મિક ભક્તિ તમને બચાવશે. ક્યાંક કોક ગરીબોના લૂછેલા આંસુઓ એના આશીર્વાદ તમને કામ આવશે.
पिंडवाड़ा में अमे ચોમાસું હતા, एक बेन હતા, हमको चातुर्मास उन्होंने ही करवाया था। इतना बढ़िया नेचर, 70 साल की संतोष बेन, हीराचंद जी ना श्राविका, એટલા સરળ, એટલા ઉદાર, એટલા સમજદાર। એને ખબર પડે કે અમને પરિસ્થિતિ થોડી નબળી છે, જરૂરત છે, કેને की जरूरत? घर पे जाते તકિયાની નીચે 10,000, 15,000, 20,000 મૂકીને કોઈને ખબર ન હોય એ રીતે મૂકીને નીકળી જાય। कौन आया, कब आया, क्या लाया, क्या रखा, कुछ नहीं। फिर पता चलता है कि भाई ये संतोष बहन आई थी कि शायद रख के गई होगी। હું તમને કહું કે માણસને જરૂર હોય ને આવી રીતે જ્યારે મળ્યા હોય ને રૂપિયા, ત્યારે અંદરથી જે હાશકારો અનુભવાય અને જે આશીર્વાદ નીકળે, આ આશીર્વાદની તાકાત બહુ જ બેમિસાલ હોય છે। દુનિયાની કોઈ ટેકનોલોજી, કોઈ દવા, કોઈ રસાયણ, કોઈ ઔષધ, કોઈ તમને બચાવી ન શકે, ત્યારે આ આશીર્વાદની મૂડી તમને બચાવી શકે છે। સંબંધીઓ બધા આંસુ લૂછનારા નથી હોતા, દેખાતા દરેક ખાડાઓ કુવા નથી હોતા, દેખાતા દરેક ખાડા કુવા નથી હોતા। આખી જાતને તમે ઘસી નાખો છો। कभी सोचा जब मेरा टाइम आएगा तो मेरे काम कौन आने वाला है? हाँ प्रकाश जी, काल की ताकतें अपने शरीर पर वार करे छे અને શરીર ઘસાય છે, છોલાય છે, કૂટાય છે, પીટાય છે। શરીરનો સ્વભાવ છે સડન પડન ગલન। कितनी भी मरम्मत करो, तेल मालिश करो, मसाज करो, रसायन लो, शिलाजीत लो, शक्ति की गोलियां लो, गाय ने चोखा दूध ने घी खाओ, मिठाई खाओ, फल फ्रूट मेवा खाओ, फिर भी शरीर अपना खुद का जो स्वभाव दिखाए बिना रहता नहीं। कालनी असर दरेक ऊपर थाय, शरीर ऊपर थाय, दरेक ना शरीर ऊपर थाय। किजंते काल सपेणम, किसके भरोसे बैठे हो? बोलो नीरव भाई, कोना ऊपर વધારે પ્રેમ છે? આ પરમાત્મા ઉપર કે પરિવાર અને પત્ની ઉપર? અંતરથી બોલજો। તમે કોને વધારે ખુશ કરવા માંગો છો, પરમાત્માને કે પરિવાર? અંગ્રેજીમાં કહેવત છે, those who wants to please all will please none। सबको खुश करना जो चाहता है वो किसी को खुश नहीं कर सकेगा। एक देव गुरु को खुश करना सीख जाओ, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मैंने कहीं मारी नोट में वांच्યું કે કેટલાક માણસોને પોતાની જાત સિવાય આખી દુનિયાને સુધારવાની અદમ્ય इच्छा હોય છે। समझा? कई लोगों को खुद के सिवा पूरी दुनिया को सुधारने की सुधारने का बेहद उत्साह होता है, खुद के सिवा। मेरा कुछ भी हो जाए, दुनिया का तो भला होना चाहिए ना। लेकिन ऐसे आदमी को पता नहीं है भाई आप खुद को सुधारे, पूरी दुनिया अपने आप सुधरी हुई लगेगी। लॉजिक है इसमें।
आप खुद सुधरे हुए नहीं हो, इसीलिए आपको पूरी दुनिया बेकार लगती है। आप जैसे हो, आपका विजन जैसा है, आपकी दृष्टि जैसी है, वैसा वातावरण, वैसे लोग आपको दिखेंगे। दारूडियान बदा दारूडिया देखा है। आप खुद सुधर जाओगे, दुनिया को सुधारने की मनसा नहीं रहेंगी। आपको लगेगा कि अपने आप दुनिया अच्छी है। विजन नहीं बोलता કેટલાક दुनिया बेकार है, बधा बोगस है, 420 છે, ક્યાંય સારો માણસ ગોત્યો જડતો નથી, બધાની નિયત ને બધાની દાનત સડેલી જ છે, આવું બોલવાવાળા છે। પણ જેની દ્રષ્ટિ સુધરેલી છે, અમારા જેવાને કોઈને પૂછો તો અમે કહીએ બધું સારું છે, બધા સારા છે। જેવી દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ। आपका जैसा भाव होगा वैसी दुनिया आपको लगेगी। आपके सामने जो व्यक्ति आती है, कुछ व्यवहार करने आती है, तो व्यवहार ही करते हो, आप उसका आगे पीछे का बैकग्राउंड भी सामने लाते हो। बाकी जैसे बात कहूंगा, दुकान पे बैठे हो आप, एक आदमी आया, लाख रुपया रोकड़ा लेकर आया है, आपके साथ कुछ परचेज करने आया है, लाख रुपया आपको रोकड़ा दे दिया, चीज परचेज करके लेके गया। दूसरा भाई आया, भाई वो आया था, आपको पता है वो तो बेवड़ा है, वो तो जुआ खेलता है, वो तो बदमाश है, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? बोलो तो सही। आपको पता चला कि वो बेवड़ा है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, बदमाश है, और लेकिन आपके पास आया, शॉपिंग करके गया, लाख रुपया रोकड़ा देके गया, 20-25% आपको मुनाफा हुआ, और उसकी नेगेटिव बात किसी ने कही तो आप क्या कहोगे मोहन जी? हमारे लिए तो अच्छा है, दूसरों के लिए कैसा नहीं, पैसा देकर माल देके गया तो फिर हमारे लिए अच्छा है ऐसा कहोगे कि मेरा तो बिजनेस हुआ, मुझे और कुछ लेना देना नहीं है। वही है, गुजराती में कहावत है, भैंसना सिंगड़ा भैंसने बारे। वो कैसा है मुझे देखना नहीं है, मेरे साथ व्यापार किया, मुझे मुनाफा कमा के दिया, दैट्स इनफ। वो क्या है, कौन है, कैसा है, क्या करता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यही मानसिकता रहती है या नहीं? तो व्यापार में जो ये मानसिकता है, वो मानसिकता व्यवहार में क्यों नहीं? सामने जब व्यक्ति आती है, बस व्यवहार कर लिया, फिर उसका आगे पीछे का भूतकाल देखने की क्या जरूरत है? इसने देवाला निकाला है, इसने ये किया है, इसने वो किया है, वो देखने की क्या जरूरत है? एक ज बात याद रखो, सौनी कर्मनी धारा पोतपोतानी छे। उसके कर्म उनके पास, मुझे क्या लेना देना? मारी पासे आव्यो छे, मैं व्यवहार करी लीधो छे, बात पूरी थई गई। ऐसी मानसिकता होगी तो बहुत सारे कर्म बंध से हम बच पाएंगे, बहुत सारे फिजूल कर्म। कल मैंने कहा था अनुपमा देवी की बात। सामान्यतया स्त्रीनी अंदर सद्गुणो અને સારો સ્વભાવ હોવો બહુ મુશ્કેલ હોય છે, પણ અનુપમા દેવી એમાં અપવાદિક હતા। 800 વર્ષ પછી પણ માત્ર આબુ દેલવાડાના દેરાસર બાંધ્યા એટલે અનુપમાને યાદ કરાય છે એવું નથી, પણ ઘરમાં પગલાની સાથે જ સદ્ગુણોની જે સુવાસ। શું છે એક સ્ત્રીનું કર્તવ્ય? શું છે?
આખા પરિવારને એક તાતણે બાંધી રાખવા, બધાને પ્રેમથી સાચવવા, પતિને પૂર્ણ સંતોષ આપવો, દીકરાઓને ધર્મ સંસ્કારોથી પુષ્ટ કરવા અને આ બધાની સાથે આખા ઘરને સંસ્કારિતા, શીલ અને સદાચારથી હર્યું ભર્યું રાખવું, ક્યાંય કોઈ દોષો અને દુર્ગુણો ઘરની અંદર ઘૂસી ન જાય એની તકેદારી રાખવી અને મુખ્યતયા તો પતિને કાન ભંભેરણીઓ કરીને હેરાન ન કરવા, ડિમાન્ડો ઊભી કરીને હેરાન ન કરવા, આ એક પત્નીનું ધર્મ કર્તવ્ય છે. જુઓ છો ને આજે ઘરમાં જે સંઘર્ષો થાય એ કોના કારણે થાય છે? વિશેષ બસ દેરાણી જેઠાણી, કાન બંબેરની, ઓછું મળ્યું, વધારે મળ્યું, આને આમ કર્યું, આને તેમ કર્યું, આને ઓછું કામ કર્યું, આને ન કર્યું, આનો છોકરો વધારે ખાઈ ગયો ને આ ઓછું ખાઈ, ક્યાં એ લગાડ થાય? અલગ રહેતા હોય સાહેબ તો બી આ વસ્તુ બને છે. જોડે રહેતા હોય તો વાત તો બરાબર, તોય નથી જતો. બહુ અઘરી વસ્તુ. તો પછી આ દેરાસર આવવાનો, પૂજાઓ કરવાનો ને બોલીઓ બોલવાનો અર્થ શું છે એ તો કહો મને. તમને ખબર છે અમારા પ્રેમસુરી મહારાજ ને ભુવન ભાનુસુરી મહારાજ અમે 60 70 ને 100 સાધુઓ સાથે રહેલા છે મહિનાઓના મહિનાઓ સુધી. एक लहू के रिश्ते आपके हमारे, एक लहू के रिश्ते किसी के नहीं, फिर भी बहुत प्रेम से, शांति से, लगाव से, एक दूसरे के प्रति सद्भाव से रहते. લોહીના સંબંધ હોવા છતાં પણ મારું તારું સ્વાર્થ, કાન બંબેરને, આને વધારે આને ઓછું, સમજદારી નથી. હમણાં આંખ મીચાશે તો સાથે શું આવશે આટલી સમજદારી નથી. અને આટલી સમજદારી હોય ને તો આપવાના ઝઘડા હોય કે લેવાના ઝઘડા હોય, તું લઈ લે યાર. આ મસ્તી, આ આનંદ તમે અનુભવતા નથી જે આનંદ અમે અનુભવીએ છીએ. ગોચરીની અંદર 4 પેંડા હોય ને 5 મહાત્મા હોય ને અમારે, અને તમારા ઘરની અંદર 4 પેંડા પડોશીના ગિફ્ટ તરીકે આવ્યા હોય ને ખાનાર 5 હોય તો હાલત શું થાય? અમારે 4 પેંડા પડ્યા રે, કોઈ લેવા તૈયાર, ઓલો કે તું લે તું લે તું લે તું લે. આ જ કારણે हमारा जो साधुपन जीवन नंदन वन बन जाता है. लेने की मनसा नहीं, देने की मनसा. चाहे चीज वस्तु हो या चाहे यश कीर्ति क्यों ना हो. गुजराती में क्या वाचेलू मोहन जी, मैं नहीं लिखा है. કેટલાક લોકો જ્યાં જાય ત્યાં ખુશી રેલાવતા હોય છે અને કેટલાક લોકો જ્યાંથી જાય ત્યાં ખુશી રેલાવતા હોય છે. સમજ में आई बात? ऐसे पुण्यवान, सेल्फलेस, परोपकारी, स्वभाव के उम्दा, मीठे मधुरे शब्द प्रयोग करने वाले, दूसरों का ही विचार करने वाले ऐसे लोग होते हैं. वो जहां भी जाते हैं उनके पुण्य, उनकी ऊर्जा, उनका जो भाव ऐसा रहता है कि जहां भी जाए पूरा का पूरा वातावरण बदल जाता है. चाहे वो आपके व्यवहारिक प्रसंग में क्यों ना आया हो, एक व्यक्ति आती है, एक और 1000 आदमी हो और एक व्यक्ति की हाजिरी
आपके प्रसंग को दिखाती है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? हमारे कुमारपाल वी शाह है ऐसे आदमी, ઢોલકા વાલે, એ કોઈ પણ પ્રસંગમાં આવે એટલે એમની 10 મિનિટની હાજરી આખા પ્રસંગની સુવાસ अलग કરી નાખે। एक और 1000 आदमी क्यों ना उसकी नोंद नहीं ली जाती है, और एक कुमारपाल भाई आ गए। चर्चा का विषय तो ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा प्रसंग उसका जो चाम बदल जाता है। કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે જ્યાં જાય ત્યાં એમના ગુણો, એમનો પરોપકાર, એમની શુદ્ધિ, એમની પવિત્રતા, એમના ભાવો, એમની ઉર્જા, એનાથી આખું વાતાવરણ બદલાઈ જાય અને બધા ખુશ થાય। જ્યાં જાય ત્યાં બધા ખુશ થાય। અને કઈ लोग ऐसे होते वो जहां से जाते वहां के हारो थયું ગયો હોય। હવે શાંતિ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ભાર ભાર લાગે નીરવભાઈ। मुंह के कटु होते हैं, शब्द के तीखे होते हैं, स्वभाव के पित्तल होते हैं। हर बात में अड़िंगाई लगाना उनका काम रहता है। ऐसे भी बिना काम की बातें रोड़े डालने, वातावरण को तंग करना, ऐसा मत करना कभी। थाय तो सारा काम करजो तमे, थाय तो भलाई करजो कोई नहीं, थाय तो वातावरण ने पवित्र अने खुशनुमा बनावजो। पण रोड़ा नाखवाना काम, वातावरण ने ढोळवाना काम, संघमा समाजमा संघर्षो અને સંકલેશો ઉભા કરવાના કામ, પાણીમાંથી પોરા કાઢવાના કામ, એકબીજાની કાન ભંભેરણીઓ કરીને વાતાવરણને તંગ કરવાના કામ ક્યારેય ના કરતા। इसमें न तो किसी का भला है न तो आपका भी भला है। खुद के लिए मोहन जी सोचना है, मैं जहां जाता हूं वहां सामने वाले को खुशी मिलती है, या मैं जहां से जाता हूं वहां खुशी मिलती है। कुछ तो होगा। दोनों में से एक तो होगा ना। आप आते हो तो बहुत खुशी होती है, ऐसे बोलने वाले भी हैं। महाराज साहब, गुरु सदगुरु देव का ऐसा पुण्य भी रहता है, क्योंकि निस्वार्थ परोपकार भावना। महाराज साहब अहिया ज रहो ने, तमे आवो छो ने आखुं वातावरण बदलाई जाय छे। संत जहां भी जाते हैं आनंद छा जाता है, खुशियां छा जाती है, वातावरण में एक ऐसा चाम आ जाता है। और जब ये संत चातुर्मास आदि करके जाते हैं, अपासरा शहर जो भी है सुना पड़ जाता है। मारा साहब तमे जाओ छो बधुं सुनु पड़ी गयुं। आप प्रेस्टीज आपणे ज ऊभी करवानी, અને આ પ્રેસ્ટીજ સાધનાથી ઊભી થાય, સદગુણોથી ઊભી થાય, પરોપકારથી ઊભી થાય, અને બીજાના હિતનો વિચાર તમે કરો એનાથી ઊભી થાય। तो दो पॉइंट समझना बात है, बहुत कीमती बात है। बस मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, इसमें आपकी जो ओरा है वो ओरा दूषित होती है। मेरा जो है दूसरे को मैं दे दूं, दूसरे का भला करूं, दूसरे का हित करूं। अरे कुछ भी ना करो तो दूसरों के लिए अच्छी भावना तो बा सकते हो। उससे आपकी जो ओरा है वो शुद्ध हो सकती है, पवित्र हो सकती है। और शुद्ध और पवित्र ये जो ओरा है, आप जहां भी जाओगे एक नया चाम खड़ा करेगा। और इसकी उसका शिखर जब तीर्थंकर परमात्मा
तीर्थंकर बनते हैं, जहां भी जाते हैं। देखो तो सही, आज महावीर स्वामी भगवान हयात है या नहीं है? यहाँ हयात है कि नहीं है? कि मोक्ष में गए? शरीर से मोक्ष में गए, शरीर से हयात नहीं है। 2500 साल पहले हयात थे, 72 साल की उनकी उम्र थी, आज नहीं है। सोचो तो सही, हयात न होने के बावजूद भी 2700 साल के बाद भी उनका शासन, उनके सिद्धांत, उनके नाम पर लाखों करोड़ों रुपए के मंदिर बनने, ये क्या है? उनका पुण्य ही काम करता है। क्योंकि जब हयात थे तब उनकी ऊर्जा बहुत पावरफुल थी, उनके भाव बहुत पावरफुल थे, सबके लिए हित की चिंता उन्होंने की। और आप एक बात लास्ट में सब सुन लेना, समझ लेना। कोई आपको चाहता है, गुजराती में कहूं छू, बहु मजानी बात, कोई तमने चाहे छे कि एना स्वार्थ खातर અને તમે પણ કોકને ચાહો છો તમારા સ્વાર્થ ખાતર। તમને ખબર પડે કે હવે આની પાસે કંઈ નથી અને આ માણસ હવે કામનો નથી, પછી એની હાલત શું થાય? સ્વાર્થના તાતણા તૂટ્યા નથી અને સંબંધોના મણકા વેર વિખેર થયા નથી। माला में मणके तब तक सुरक्षित है जब तक डोरे में बंधे हुए हैं। डोरा टूटते ही मणके बेर बिखेर हो जाते हैं कि नहीं होते? स्वार्थ का डोरा है, और स्वार्थ का डोरा जब टूटता है तब रिश्तों के मन के बैर बिखेर हो जाते हैं। मानना मत, कितना मान है मेरा, आपका मान नहीं है, आपके जेब में जो है उसका मान है। आपका पुण्य तेज है तब तक ये पुण्य के प्रभाव से आपका मान है। पुण्य परवार से तो कोई कूतरो ही तुम्हारी सामे जोवा नहीं आवे। खिस्सा खाली थशे त्यारे मोढुं फेरवीने लोको जता रहेशे। चलो मांगवा आवशे तो उपाधि थशे। છે ને આ બધું તમારા? बेटी की घटना नहीं अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आपने देखी? जाहिर में चक्कू ना घा मारे लोगों जोता जाए અને છતાં કોઈના પેટનું પાણી પણ હલે નહીં। 16 વર્ષની દીકરી જાહેરમાં ચક્કુ મારીને મારી નાખે, આટલા ઘા કરીને, અને કોઈના પેટનું પાણી ના હલે। આટલી નિષ્ઠુરતા! किसी को कोई लेना और देना ही नहीं। अपने को क्या, पुलिस आएगी अपने को पकड़ेगी, बयान देना पड़ेगा, रवाना थाओ। आ निष्ठुरतानी पराकाष्ठा है। कल इनका हुआ, आज अपना भी हो सकता है। इतने निष्ठुर मत बनिए। कोईना दुख ने जोईने आपने असर ज न थाय एवा निष्ठुर तो न बनो। थोड़ा माथी थोड़ू आपशो, कहीं तमारू घटवानुं नथी। आज तारो ने काल मारो, वारा पछी आवशे वारो। आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी आ सकती है। आज किसी को कुछ हाथ दिया होगा, कुछ हेल्प की होगी, कल कोई हमारी बारी आएगी तो हमको भी हेल्प करने वाला मिलेगा। तत्वात् सूत्र कहता है परस्पर उपग्रहो जीवाना। जीवन कैसे चलता है? एक दूसरों के प्रति उपकार करने से। उपग्रह मतलब उपकार। तत्वात् सूत्र में कहा जीवो जीवस्य जीवन में एक दूसरे को उपकार करो, हेल्प करो, हाथ पकड़ो, सांत्वना दो, सहाय करो, उसमें ही सबका जीवन चलता है। परस्पर
ઉપગ્રહો જીવાના. માનો કે આ નીરવભાઈ તમે એકલા જંગલમાં જતા રહો, જીવન ચાલે ખરો? સવારથી સાંજ સુધી કેટલા લોકોના ઉપકાર ઉપર જીવન ચાલે છે. દૂધવાળો આવે, છાપાવાળો આવે, કામવાળા આવે, નોકરો આવે, વેપારમાં ગ્રાહકો આવે, આવે કે ના આવે? ये सबके उपकार से अपना जीवन चलता है कि नहीं चलता है? सवार शाम સુધી लिस्ट करो तो खबर पड़े, हजारों की तादाद में लोग संपर्क में आते हैं, व्यवहार होता है, तो ही हमारा जीवन टिकता है. हमारी भी फर्ज बनती है, कर्तव्य बनता है कि हम भी किसी को सहायक बने, किसी के प्रति उपकार करें. परमात्मा महावीर जी ने यही काम किया, अपने पर अपकार करने वालों के ऊपर भी परमात्मा ने उपकार ही कर दिया, और ये गुण हमारे में भी आत्मसात हो, ऐसी भावना.